Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy at your homes. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you all know that we are on unit number 1, citizenship, and we have covered the full unit. आपने तमाम objectives जो हैं वो cover कर लिए हैं, but today is the review of this unit. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको असेस भी करूंगी, आपकी एक असेसमेंट होगी कि आपने इस यूनिट से क्या क्या सीखा है, आपने क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको जो है वो थॉरली लर्न किया है, सो दैट आई विल एवेल्युएट यू. बट बिफोर दैट आई विल गिव यू अ कंप्लीट रिव्यू ऑफ दिस यूनिट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर आर ऑल द ऑब्जेक्टिव्स गिवन that you have covered in this unit. So my dear students, let's quickly look at the Islamic perspectives that we have covered in this unit. So you are the best community which has been brought forth for mankind. You command what is proper and forbid what is improper, and you believe in God. So my dear students, हमने इस Islamic perspective में पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत बनाई है वो ऐसी उम्मत है कि जो लोगों को बुराइयों से रोकती है और अच्छे कामों की तरगीब देती है. और इसके अलावा जो है हम जो है वो हमेशा जो है अच्छे काम जो हैं वो हमें करने चाहिए क्योंकि वी आर गुड सिटीजन्स. And then indeed in the creation of heavens and the earth and the alternation of night and day are the signs for those of understanding. So my dear students, अल्लाह ताला ने जो दिन और रात का तसलसल बनाया है कि दिन आता है उसके बाद रात आती है, इसी तरह गर्मी सर्दी के मौसम आते हैं. सो इन तमाम चीज़ों में जो समझ और अकल रखने वाले लोग हैं उनके लिए निशानियां हैं ताकि हम अल्लाह ताला के ऊपर जो है वो पूरा यकीन ले आएँ. So my dear students, from here we will move forward towards the next Islamic perspective. Do not kill a soul which Allah has made sacred except through the due process of law. So my dear students, हम जो है वो कोई नहीं है किसी को जज करने वाले या किसी को सज़ा देने वाले या जज़ा देने वाले, लेकिन जब जो कानून मुकर्रर किए होते हैं हमें उनके ऊपर पूरा अमल करना चाहिए और कानून के तहत जो सज़ा मिलती है वही सज़ा जो है वो ठीक होती है. So and among his signs is the creation of heavens and the earth, ये हमने already कर लिया है. And the difference of your tongues and the colors, surely in this there are signs for the persons having knowledge. So my dear students, इस इस्लामिक perspective से हमें ये पता चलता है कि अल्लाह ताला ने जो है वो मुख्तलिफ रंग व नस्ल के लोग बनाए हैं, मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले लोग बनाए हैं. इसी तरह से जैसे अल्लाह ताला ने दिन और रात बनाई है, इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के लोग भी बनाए हैं. और जो अकल और समझ रखने वाले लोग हैं उनके लिए इन तमाम चीज़ों के अंदर निशानियां हैं. So my dear students, the reward of an evil deed is its equivalent, but whoever pardons and seeks reconciliation, then their reward is with Allah. He certainly does not like the wrongdoers. So my dear students, वैसे तो बुराई का जवाब बुराई है, लेकिन अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करता है जो माफ़ कर देते हैं, और बुरी बात का जवाब भी है वो भले तरीके से देते हैं या अच्छे तरीके से देते हैं. सो हमें जो है हमेशा जो है वो टॉलरेट करना चाहिए और चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए. And peace, a word from a merciful Lord. So my dear students, अल्लाह ताला भी जो है वो हमेशा कहते हैं कि अमन जो है वो कायम करना चाहिए हमें, और अमन जो है उससे जो है आपके इर्द गिर्द जो है वो कामयाबी फैलती है. और पीसफुल जगह पर जब आप रहते हैं या जब आप अमन का पैगाम देते हैं तो हर चीज़ जो है वो खुद ब खुद स्ट्रीमलाइन हो जाती है, ठीक हो जाती है. So my dear students, let's quickly refresh your knowledge, and for that you have to answer a few questions. Who is a citizen and how he gets citizenship? The person who is living in a country is called the citizen of that country. And who is how does he get the citizenship? When someone is born in that country and he is also getting education from there, so that is how he gets the citizenship of that country. Tell at least 2 rights of a citizen. Yes, very good. कोई से भी 2 rights आप मुझे बता सकते हैं. Very good. Now, what can you do to make your society a better place to live?
आपकी जैसे बहुत सारे आपके अपने राइट्स हैं जो कि आपको याद भी हैं, इसी तरह आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं जिससे आप अपने इर्द गिर्द की जगह को, अपने रहने की जगह को बेहतर बना सकते हैं. लाइक कीपिंग योर एनवायरनमेंट क्लीन, by helping others. So these are some ways, or these are your responsibilities from which you can make your society a worth living or a better living place. Now, what is meant by civic sense? Yes, very good. Yes, जो भी citizen जो है related to citizens, जो भी आपकी responsibilities हैं और आपके rights हैं, that is called civic sense. Now list some civic responsibilities. Following the rules, following the laws, keeping your surroundings clean. These are some civic responsibilities. Differentiate between citizen, global citizen and digital citizen. हमने ये सब पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा सोचें and then you can easily answer these questions. So, a citizen is a person who is living in a country. He is the citizen of that country. Then who is a global citizen? Because we all are human beings and we are living in this world. So, globally we are connected. So, that is how we are global citizens. Now, who is a digital citizen? A person who uses communications through media. यानी कि आप अगर digitally connected हैं, you are using internet, you are using Facebook, Twitter, Instagram, you are using such platforms. So that is how you are connected with the world outside. So that is how you are a digital citizen. Okay, my dear students, in your opinion as a human being, what rights should be granted to everyone? Very good. कौन कौन से rights जो हैं वो हर किसी के पास होने चाहिए? Human rights जो हैं, freedom of living. Then next, very good. जल्दी जल्दी से सोचकर बताएं. Education, healthcare facilities, these are some basic human rights. Now, what are basic human rights? We have just discussed them. List some fundamental human rights. Same thing. Now, list some characteristics of diverse group of society. So, जब हम एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं तो आपको मुख्तलिफ तरह के लोग अपने अंदर नज़र आते हैं. मुख्तलिफ होते हैं वो आपसे. किस किस तरह से वो आपसे मुख्तलिफ होते हैं? रिलीजियस तौर पे हम मुख्तलिफ होते हैं, हम फिजिकली डिफरेंट हैं, हम जेंडर वाइज डिफरेंट हैं, हम लैंग्वेज वाइज डिफरेंट हैं. सो दैट इज़ हाउ वी आर डाइवर्स in multiple ways. Then list the key characteristics of diverse group of societies. We have just done that. So what is diversity? The variety is called diversity. Now, how do you manage the conflicts? Through negotiation and discussion. Very good. Do you face conflicts with your peer groups? We often do that. हम जब अपने दोस्तों के साथ या अपने साथियों के साथ खेल रहे होते हैं या कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो conflict हो जाता है. It's always there. Okay, my dear students, now on page number 6, we discussed about the citizenship. The rights and responsibilities that are related to the citizens of a country are known as the rights and responsibilities. Right to life, education, freedom of religion and expression are some civic rights. So then we discussed about civic responsibilities and civic rights. So civic responsibilities include following rules: resolving conflicts, cleaning your area, respecting elders, etc. और जो rights हैं आपके, the rights and responsibilities change with the time due to change in the world. So हमने ये भी पढ़ा था कि जैसे जैसे आप लोग बड़े होते जाते हैं या आपकी एज ज़्यादा होती जाती है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो चेंज होती जाती हैं. इसी तरीके से जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है इसी तरह से आपकी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो चेंज होती जा रही हैं. Due to modernization, due to the change in technology, that is why these rights and responsibilities are changing. Okay, my dear students, then we move towards page number 8. तो यहाँ पे हमने digital citizenship के बारे में पढ़ा था. A person who uses information technology and interacts with the broader world is called a digital citizen. A digital citizen, every person have some responsibilities that is bound to fulfill as a respectable citizen. So जिस तरह से एक मुल्क में रहते हुए आपकी कुछ responsibilities और आपके कुछ rights होते हैं, इसी तरह जब आप
जब आप इंटरैक्ट करते हैं लोगों से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू, तब भी आपकी कुछ राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं टू बीइंग अ गुड डिजिटल सिटीजन. And then we move towards every human being is granted some basic rights that no one can take. ठीक है, फिर हमने ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ा था कि आपके कुछ ऐसे राइट्स हैं जो कि पूरी दुनिया में आपको जो है वो आप चाहे किसी भी दुनिया के कोने में चले जाएं, whether you are living in Pakistan or then you move towards an other continent, या आप किसी दूसरी मुल्क में चले जाएं, लेकिन आपके राइट्स जो हैं वो सिमिलर रहेंगे. These rights are called human rights, जो आपसे कोई नहीं ले सकता. सो वी डिस्कस्ड अबाउट ह्यूमन राइट्स, जो कि ये ह्यूमन राइट्स जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस से जो हैं वो क्लैरिफाइड है. उन्होंने जो है वो इनको जो है वो सब के इंसानों के लिए बनाया है. So the society we are living in is diverse. To make a diverse society a peaceful place, everyone should follow to show tolerance. ठीक है, और अगर आपने इस दुनिया में आप रह रहे हैं और अगर आपने इसको एक अच्छी रहने की जगह बनाना है, एक पीसफुल जगह बनाना है, तो आपको अपने अंदर टॉलरेंस जो है वो डेवलप करनी पड़ेगी. एंड देन पीपल आर बॉर्न विद द राइट्स, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच. हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा था कि आपके पास ये राइट है कि आप अपनी बात का, अपनी राय का इजहार कर सकें, लेकिन स्टिल देयर आर लिमिट्स, कि आपकी बात से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए. वहाँ पे ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं रहती, वहाँ पे ये आप दूसरे इंसान के सेंटिमेंट्स को तकलीफ देना शुरू कर देते हैं. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड हर्टिंग अदर्स. While expressing the thoughts, we should keep in mind the sentiments of others. ठीक है, यही बात मैं भी आपको डिस्कस करी थी आपके साथ. And then we move towards page number 12, जहाँ पे हमने conflicts के बारे में पढ़ा था. Conflicts occur due to difference in point of view. We can resolve conflicts through discussion. We can maintain peace and accepting others. By accepting others. ठीक है. So conflict क्यों पैदा होता है या conflict पैदा होने की वजह क्या है? वजह ये है कि जब आप मुख्तलिफ लोगों के साथ बैठते हैं, बात करते हैं, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ होता है. एंड व्हेन देयर इज चेंज और डिफरेंस इन पॉइंट ऑफ व्यूज, देन देयर इज ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट. और कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का तरीका हमेशा ये होता है कि आप टॉलरेंस पैदा करें एंड ट्राई टू रिजॉल्व योर कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू डिस्कशन एंड नेगोशिएशन. And then we move towards page number 13, treating everyone equally, showing tolerance and empathy towards people can make a society peaceful. ठीक है, अब आप अपनी सोसाइटी को कैसे पीसफुल बना सकते हैं? रिस्पेक्ट अदर्स, दूसरों की बात को सुने, दूसरों की बात को इज्जत दें, दूसरों को टॉलरेट करें. सो दैट इज हाउ यू कैन मेक योर सराउंडिंग पीसफुल. एंड देन वी मूव टूवर्ड्स पेज नंबर 14, जहाँ पे हमने कॉमन एटिकेट्स डिस्कस किए थे. एवरीवन शुड अडॉप्ट और प्रैक्टिस कॉमन एटिकेट्स टू मेक अ बेटर सोसाइटी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, कॉमन एटिकेट्स जो हैं वो पूरी दुनिया में फॉलो किए जाते हैं. सो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड कॉमन. और कॉमन एटिकेट्स को फॉलो करने से आप अपनी सराउंडिंग्स को पीसफुल बना सकते हैं, एंड दैट इज़ हाउ यू कैन बिकम अ रिस्पॉन्सिबल एंड गुड सिटीजन ऑल्सो. So my dear students, this is all for the review. So my dear students, your homework is given on page number 16. आप ये multiple choice questions जो है करेंगे in homework, और आपको मैंने ये सारे homeworks दिए थे, आपने ये complete कर लिए होंगे. Now my dear students, here is given a worksheet. बहुत आसान है, ये general सी worksheet है, ज़रा इसको carefully देखें. You can also get this worksheet from the description box below this video, and you can also get this worksheet in print form by your teacher. So my dear students, look at here. What is this boy saying? Hello neighbor. There are many ways to be a good citizen. When you have a picnic at the park, you clean up after yourself. If you see a crime being committed, you call the police. You respect your neighbors by being polite and kind to them. You vote in elections. So यहाँ पे कुछ तरीके लिखे हुए हैं to being a responsible and good citizen. So my dear students, now let's look at the questions given below. Do you do any of the things above? Which ones? आप ऊपर दी गई इन चीज़ों में से कौन से जो responsibilities हैं उनको follow करते हैं? Write them down. Do you think it means to be a good citizen? What do you think it means to be a good citizen? एक अच्छा शहरी जो है वो बनने के लिए
क्या क्या जो है वो चीज़ों की ज़रूरत होती है, आपने वो यहाँ पे लिखनी है. What else can you do to be a good citizen? इसके अलावा आप कैसे जो है वो अच्छे शहरी बन सकते हैं. और लास्ट क्वेश्चन है, ऑन द बैक ऑफ द शीट ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर सेल्फ बींग अ गुड सिटीजन. वेरी फन थिंग कि आपने अपनी पिक्चर इस शीट की बैक साइड पर ड्रॉ करनी है, बीइंग अ गुड सिटीजन, कि आप कैसे अपने आप को एक अच्छा शहरी बनाते हुए दिखा सकते हैं. ठीक है, कैसे क्या क्या चीज़ें आप कर रहे होंगे तो आप एक अच्छे शहरी बनेंगे. So my dear students, this is your evaluation. Submit it to your teacher. She will grade you for this. So my dear students, this is all for unit number 1. I hope you have enjoyed this unit and you have learned a lot of things from it. Keep everybody around you safe. Have a good day and Allah Hafiz.